हाय। हाय हाय व्हाट्सअप। कैसा का है बवा? हाय। ठीक है भाई। ध्रुव भी आ गया। भाई जो मेरे को जानते हो इधर से निकल जाओ यार, एम्बैरेसिंग हो जाएगा मेरे लिए। वेयर डिड यू लर्न दिस डेवलपमेंट? जेई चूज करके लाइफ खराब कर दी क्या? ओके, बहुत सही क्वेश्चन पूछा। मैं दोनों का आंसर करता हूँ। वेयर डिड यू लर्न? ऑन द इंटरनेट। ओके, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री। उधर जाकर मतलब देख लो। आई इवन रोड सम, हाँ भाई कॉफ़ी दे दे। आई इवन रोड सम ब्लॉग्स अबाउट वेयर एग्जैक्टली व्हाट प्लेटफॉर्म्स आई यूज, मैंने कौन सा वीडियो देखा, सब मैंने डाला है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, जेई आई एक्चुअली मैंने जेई किया था 11th में। इट इज़ अ गुड चॉइस इफ यू हैव दैट कि भाई मैं कर लूँगा। मेरे को भी स्टार्टिंग में होता है, बट यू शुड हैव अ डिसिप्लिन, जो मेरे में तो बिल्कुल नहीं है। नो कोड डेवलपमेंट, इट्स सो द प्रॉब्लम विद नो कोड डेवलपमेंट इज छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा आइडिया। छोटे प्रोजेक्ट्स, वेबसाइट्स और ओके, ब्लॉग्स आर dravya.dev/blogs, आई डोंट नो, dravya.dev/blogs। प्लीज़ मुझे Q&A के फीचर में डाल देना नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट मेरे पास एक लिस्ट हो अगर क्वेश्चन हो तो। अबाउट नो कोड, राइट? सो द प्रॉब्लम विद नो कोड इज कि एक पॉइंट तक छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है, लेकिन एक पॉइंट तक नो कोड से कुछ बनाया जा सकता है, बट आफ्टर दैट इट कैन गेट रियली रियली डिफिकल्ट टू स्केल, राइट? तो तुम लोग को या तो पूरा का पूरा रीराइट करना पड़ेगा नो कोड में और ऐसा। सो हाँ, मतलब वो थोड़ा सा, मतलब यू शुड बी अवेयर। अगर तुम्हें एक लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो मेरे को नहीं लगता कि नो कोड करना चाहिए। टाइमली अपडेट, ओके, सो टाइमली चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। और हम लोग ने ऐसा सोचा था कि हम लोग प्रोग्रेसिवली फीचर्स ऐड करेंगे, लेकिन क्या हुआ ना, अभी एक साथ इतने सारे यूजर्स आ गए। सो आई एम अ लिटिल बिट scared of releasing timely, because I want it to be really really good before launching it. और अभी ऑनेस्टली डेवलपमेंट बहुत स्लो है, लाइक इसको थोड़ा करना पड़ेगा। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि टाइमली का जो अभी का वर्जन है वो काम नहीं कर रहा। सो दैट इज समथिंग दैट मुझे उसके बारे में थोड़ा करना चाहिए, लेकिन ठीक है अभी इतना भी यूजफुल नहीं है अभी का वर्जन टाइमली का। दोनों कर ले। ओके, स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज अ वीडियो एडिटर। हाँ, यू कैन डू बोथ एट द सेम टाइम। मैं अटक गया, मतलब क्या है ना कि जेई तू करता रहेगा ना तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम है कि तू क्या ही कैसे करेगा जेई अगर तेरा माइंड ही क्लियर नहीं है। सो अगर तेरे को वीडियो एडिटिंग अच्छी लगती है और तेरे को ऐसा लगता है कि तू फ्री टाइम में वीडियो एडिटिंग में कर सकता है तो तेरे को करना चाहिए। रिमोट वर्क, आई लव रिमोट वर्क। एक्चुअली मैं अभी काम कर रहा हूँ वो रिमोट ही है, और मैं ऐसे घूम सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बोर्ड में मुझे 86 है ब्रो। I did not do JEE. Okay, so languages. I code mainly in TypeScript and sometimes Python, JavaScript obviously.
आई यूज टेलविंड फॉर स्टाइलिंग इंस्टेड ऑफ CSS. और मुंबई से हूँ ब्रो, मुंबई से. ओह, HSL is not a big L. It is really used. हाँ, languages again बोल रहा ना, TypeScript, JavaScript, Python. आज के दिन में मेरे हिसाब से इतना ही सीखना जरूरी है. मेरा जस्ट 12th खत्म हुआ ब्रो, राजपूत. $13 लाख लोग देंगे 2025 में. 13 लाख क्या जानना है रिमोट वर्क के बारे में? I guess they knew CSS, HTML, C, CPP, Java, Python. I know C, C++, Java, but मैंने ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाया उसमें. तो मैं मेनली टाइपस्क्रिप्ट में ही मेरा सारा काम हो जाता है आज के दिन में. तो वैसा ज़रूरी नहीं है. इफ़ यू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, म्यूज़िक बजाओ भाई. हाँ चलो, अगर तुम लोग मुझे बोर कर दोगे तो मैं वो लेके आऊँगा, टेंशन मत ले. जैंगो भाई, जैंगो मेरा दिमाग ख़राब कर देता है. सो फॉर द नॉन कोडिंग पीपल, जैंगो एक फ्रेमवर्क है जिससे वेबसाइट बनाई जा सकती है. और व्हाट्स डूइंग करंट प्रोजेक्ट, फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ तुमसे, अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दो भाई. ओके, आई एम द्रव्य, मैं मुंबई से हूँ. एंड आई हैव बिन कोडिंग सिंस ऑलमोस्ट 2 years नाउ, 1.5 year ऐसा. और recently I sold one company in 2021 and recently I sold one more in 2023. I am working in job. Should I learn HTML CSS right now? क्योंकि भाई 5 लोगों को जानता हूँ और उनमें से 4 लोग वेब डिज़ाइनर्स हैं. हाँ, HTML CSS तो ईजी भी है, कोई भी सीख सकता है. What should I have to learn to start? Okay, so I will just leave a link in the comments. हाँ, ये लिंक पर जाओ यार तुम लोग. इसमें सारे हैं. Where did I learn from है इसमें. What resources I used, इसमें tips है. Okay, where did you sell the company? So मैंने बायर को अप्रोच किया. हाइपफ्यूरी था बायर, और मुझे पता था कि ट्विटर के बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज किधर है. सो देयर इज़ हाइपफ्यूरी, ट्वीट हंटर और ऐसे 2-3 बड़े बड़े कंपनीज हैं. मुझे पता था कि उसके जो ओनर्स हैं ना, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप चैट में है. तो मैं वो ग्रुप चैट में गया, स्लैक पर था वो, और मैंने उधर सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बोल दिया. तो मुझे 3-4-5 लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो मैंने उधर भेज दिया. Which tag did you use to build your company? We used again TypeScript, a little bit of Python, and that is really it. Okay, so अगर देखा जाए तो Next.js यूज़ किया था, TRPC यूज़ किया था, और हाँ बस डेटाबेस के लिए Redis यूज़ किया था. For how much, that will remain a secret for now. How did you approach the buyer? Okay, answered. Don't you think with introduction, Bard and ChatGPT created a setback for developers? So I recently wrote a Twitter thread about this. मेरे Instagram profile पर है @dravya_sharper. तो what I think about the AI revolution is कि AI तुम लोग की AI can replace developers, but AI cannot replace founders or productivity. The people who, you know, product side of people. Okay, productivity का किसी ने तो बोला था. Some tips for productivity. Bro, I am not productive myself यार, क्या करें. So back to AI. तो हाँ, जब तक दुनिया में प्रॉब्लम्स है तब तक कोडिंग काम आएगी. क्योंकि AI जो कोड लिख भी देता है ना, देयर इज स्मॉल डेवलपर, देयर आर मल्टीपल AI टूल्स, जैसे होता है. लेकिन उसमें मतलब पूरा प्रोजेक्ट, पूरा कंपनी तो नहीं बन सकता अभी के लिए. यस, अच्छा ठीक है भाई. पाइथन इज़ अ ग्रेट फर्स्ट लैंग्वेज. इट वॉज माई फर्स्ट लैंग्वेज एज वेल. लेकिन आज के दिन में अगर किसी को फर्स्ट लैंग्वेज ऐसा चाहिए, सो आई वुड से जावास्क्रिप्ट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट, और पाइथन.
प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोर्डम. सो ट्रू यार. जितना बोर होता है उतना प्रोडक्टिव होता है. अरे लेकिन प्रोडक्टिविटी के लिए है ना, ऐसा अंदर से ही होना चाहिए कि मुझे आज ये करना है और वो चीज़ करने के सारे. करंट वर्किंग प्रोजेक्ट्स. सो आई एम वर्किंग ऑन एन ऐप. ओके, दैट ऐप अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बहुत सोशल ऐप है. देन आई एम वर्किंग ऑन टाइमली, जिसके बारे में तुम लोग को पता है. नो, इट इज नॉट मोर देन 1 मिलियन. भाई पागल है क्या? इट इज मोर देन इट इज इन 5 डिजिट्स इन डॉलर्स. मैं इतना बोल सकता हूँ. लाइफ इज गुड मैन. यस, घूम रहा हूँ मैं, मजे कर रहा हूँ. Would you like to collaborate to build productive tools based on GPT? Yes, sure, definitely. Shoot me a DM at Dravyasha account पर. Adstara versus AdSense. पूरी दुनिया AdSense यूज़ कर रही है, तो I would use AdSense. और उसमें I think पे थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बेटर है. Can you hiring for your company? Bro, it is not like a company. Like there is this thing. Do not make startups, make projects. So this is a project और पूरी टीम ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है अभी के लिए. हाउ डिड यू मीट ओम? सो उसके बारे में हम लोग पूरा वीडियो करेंगे, लेकिन बेसिकली मेरे पापा का बिजनेस और ओम के पापा का बिजनेस सेम है. तो वन ऑफ दीज बिजनेस ट्रिप्स में हम लोग मिले थे, तो 8th स्टैंडर्ड में. सो आफ्टर 8th स्टैंडर्ड हम लोग ने इतनी बात नहीं की थी, लेकिन फिर हम लोग एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू वापस से मिले और फिर साथ में घूमना चालू किया. सबसे पहले किसने स्टार्ट करा चाहिए बिगिनर्स को? सबसे पहले पाइथन से स्टार्ट कर लो यार, मेरे हिसाब से पाइथन, या अगर तुम लोगों को वेब में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर लो. हाउ मैनी प्रोडक्ट्स यू स्टार्टेड जनरेटिंग रेवेन्यूज? सो I have 2 products that are generating passive income, passive revenue. So one is Siri GPT. Siri GPT करके है, which adds chat GPT to your Siri basically, and you can talk to it. So yes. रबी तरहमन, मैं देखता हूँ तेरा ब्लॉग. I have saved it. Thank you. किसी को बात करना आनी हो तो मुझे रिक्वेस्ट भेज देना, मैं इनवाइट कर लूँगा, टेंशन नहीं है. बिना घर से निकले फ्रेंड्स किसे बनाता है? अरे मैं घर से निकलता हूँ यार, ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं निकलता हूँ. व्हाट इज AI रिसर्चर? सो बेसिकली AI रिसर्चर में बहुत सारा न्यूरो साइंस भी आता है, बहुत कुछ आता है. मतलब उसमें क्या होता है, दे आर रियली गुड एट understanding how our brain works, and AI is also a bunch of neural networks. So it is maths plus neural networks और वो सब. और AI में बहुत philosophical भी आता है, मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि you have to align it. चलो, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं. LinkedIn profile. It is on my website, I think. Bubble development. क्या होता है वो? सर्च करता है. Yeah. Hi. Hi. Yeah, I just seen your profile and it is quite inspiring a lot. Thanks, man. So yeah, basically what makes me so impressed is that being at very small age, so you guys are building some stuff and also creating a social awareness among the people, right? So that is very interesting, and your content is also very eye-catchy and very some kind of funky vibe. It's including some technology inside. Right. So the content that's really. हम लोग को ऐसा ही है कि no one wants to only learn about development, right? लोगों को entertainment first चाहिए. Yes. So, yes, definitely. Yeah. So I absolutely love your content, especially. Thanks, so, man. Yeah. Yeah, being a developer, developing a things is also,
yeah, developing things is one of the best things. And apart from it, generating content is also one of the craziest things. So teaching how the people have to do, and also, yeah. So some people also even inspire from you, right? So Right. this kid That is the good is thing. doing like this, and that's also motivated me a lot. Okay, this kid is doing like this. Okay, I am as a developer, I can also do it the similar ways, right? Right. Right. Yes, yes. So, can you give some? Yeah, I just want to ask you some questions regarding so how this tech curiosity popped out in your mind in very small age. ओके सो आई मुझे स्टार्टिंग से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था क्योंकि मेरे पास एक Mm-hmm. आईपैड था तो मैं पूरा टाइम वो आईपैड पर टाइम पास करता रहता था मतलब मैं बहुत बच्चा था तभी तो आई यूज टू डाउनलोड ऑल एप्स लिटरली मेरे को ऐप स्टोर पर जो दिखता था मैं वो डाउनलोड करता था गेम होती तो गेम खेलता था कुछ इंटरेस्टिंग होता तो Okay. मैं वो कर Okay. Okay. तो तभी मुझे ना लाइक इंटरेस्ट आ गया था टेक्नोलॉजी में लेकिन मुझे कोडिंग पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करता है कि लोग एप्स कैसे Mm-hmm. बनाते हैं मुझे कुछ नहीं पता था तो मुझे जिस दिन मेरा Mm-hmm. लैपटॉप मिला ना मैंने ऐसे सोचा कि चल मैं करता हूँ और लकीली Mm-hmm. वो दिन ऐसे रैंडमली एक यूट्यूब वीडियो भी मिला तो मैंने बोला चलो ठीक है बैठते हैं तो जैसे ही वो यूट्यूब वीडियो स्टार्ट हुआ ना मुझे एकदम इंटरेस्ट आ गया एंड Okay. Okay. कंटिन्यू 16 आवर्स का पूरा था आई स्टार्ट 16 आवर्स कंटिन्यूअसली मैंने पाइथन सीख लिया उस दिन ऐसा Okay. Okay. दैट Okay. It's crazy, 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 हाय crazy. ओम इज हियर So, yeah. Sorry. हाय ओम ओम अभी ऑडियंस में आया Okay. 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 Yeah. So, यस and second question for you is that yeah, what's the suggestion that you want to give to the beginners especially? So, the people who are just started coding and what kind of technology that they have to be focused on, like whether it's a programming. Some people might started to want to solve some DSA or competitive program at the beginning level, right? So, yeah, what kind of suggestion that you want to give to the youngsters who just started their coding journey now, and what's that roadmap? So just give me a few suggestions so all our audience will all be able to understand. राइट सो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि यू ओनली नीड टू एक्सेल इन वन लैंग्वेज ओके और अगर Yes, yes. एक्सीलेंट लैंग्वेज पकड़नी है तो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट लाइक जावास्क्रिप्ट का बेसिकली बेटर वर्जन है Yes, टाइपस्क्रिप्ट yes, I know. तो लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट विल गेट यू एवरीवेयर कुछ भी कर सकते हो टाइपस्क्रिप्ट से ऐप बनानी Okay. ऐप बना लो वेबसाइट बना लो कुछ ऑटोमेशन बना लो बैकएंड में चला लो सब हो जाता है उसमें पाइथन में फॉर एग्जांपल एप्स नहीं बनते इतने मतलब पॉसिबल है लेकिन लोग बनाते नहीं है क्योंकि इट्स नॉट स्केलेबल so I think JavaScript should be the starting point for development. Next, वेब सीखना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से क्योंकि Yes, yes. प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं डेवलपर से ज्यादा प्रोडक्ट इंजीनियर हूँ क्योंकि मुझे ऐसा है कि कुछ डिलीवर करना है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए डिलीवर करने के लिए उसको एक ऐसे स्टेज में रखना पड़ता है कि लोग उसको यूज करें राइट एंड द मोर यूज इट तो इसके लिए मैं वेब पे इतना वो हूँ कि वेब इतना इजीली एक्सेसिबल है कि एक बार बना लो कोई भी किधर यूज कर तो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट राइट नाउ एंड लेकिन कुछ लोग ऐसे एआई एमएल ऑटोमेशन उसमें रहता है तो उसके लिए पाइथन से स्टार्ट करो Okay. You spoke about DSA. So honestly, I only know some basic data structures and algorithms. And मुझे लगता है कि लोग फालतू का टाइम वेस्ट करता है इसमें तुम लोग के सीए में एक भी अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट हुआ ना तो ये DSA करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1000 लीड कोड सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर प्रोफाइल अच्छा हुआ तो एंड पीपल लाइक आज के दिन में प्रूफ ऑफ वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट दैन प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंस Yeah. You don't really all you need to prove is कि you can do something और एक proof of work profile होता है so I think people should focus more on the proof of work profile than building their CV by DSA algorithm important है obviously लेकिन Yes, definitely. पहले मोटिवेटेड भी रहते हैं अगर अपन खुद की चीजें बनाते हैं तो proof of work profile बनाओ Yes. That's nice.
So yeah, to summarize what you have said, so basically in order to build that problem solving mindset, we can start with any of the programming languages like Python, so which is very easy to learn. So after that, you can move to the web technologies like HTML and CSS, and after that, you can jump to the JavaScript. So after learning the JavaScript, you can able to build all the web applications at up to certain level. So JavaScript, what's the good about the JavaScript is that you can able to build the front end and the back end as well with the JavaScript. You can build the back end with the Node.js, so which is based on the JavaScript again, and with the front end it's a React.js. So we can build any all the front end part with the React.js part. So this is the thing, and obviously databases like SQL, MongoDB, obviously. Yes, that's very nice, very nice. Right. Yes, very nice. So yeah, and coming to the third question, so I just want to know how you guys are able to sell the products that you are building and able to generate that revenues. Okay. Yeah. So my biggest revenue generating product अभी का is Siri GPT, जो basically Chat GPT on Siri. Okay. तो वो I knew that there is a AI का wave आ रहा है, तो like जैसे ही API launch हुआ था ना, तो मैंने वो बना दिया था. So मैंने Twitter पे डाला and people started using it. People started recommending it to each other. और मेरे बहुत कम है. It's like 400 rupees per month है उसका, मतलब लोगों के लिए तो वो बहुत ही कम है. So my pricing was right, my execution was easy, and वो प्रोजेक्ट बनाने में मुझे 3-4 घंटे लगे थे, तो इतना इजी था. So AI का ये बात है कि you either ride the wave or drown in the water. So yes, definitely. Yeah. Notice waves, notice these problems जो आता है. लोगों को क्या करना है, अभी Chat GPT आया, लोग इतना यूज कर रहे हैं, तो why not make it on Siri, right? So that was yes, very nice, very nice. Yeah, it's present there is a do or die situations in the tech industry especially. You should have to adopt that ChatGPT. So you have to learn how to use that ChatGPT. Okay, so in order to boost your productivity or in order to boost your efficiency. Okay, so yeah, it's a do or die situation for everyone. Either you have to adopt it, or if you don't adopt it, and you will get just outdated. That's it. Right. So yes, very nice. So use OpenAI API. So like if you're building an AI product, trust me, use some API like खुद का AI बनाना, and you would basically be going against these giants, right? मैंने कंपनीज देखी है जिधर पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क डिवीजन को फायर कर दिया क्योंकि रातों रात OpenAI आ गया. तो अगर तुम लोगों को जरूरत नहीं है, all you need to do is learn how to use these products. Yes. Prompt engineering. The specific technical term is the prompt engineering. So yes. So if you able to learn the prompt engineering, so in fact, if you don't know the coding as well, the ChatGPT will able to give the code, whatever the requirement you have. Okay, so it's able to generate the code whatever we require. So, but what you have to learn is that how to engineer that prompt, how to design that prompt. So that plays a crucial role. Yes. Are you phase 2? Someone just asked. So what do you think? Sorry. I'm saying about the prompt. I'm not able to get you. Can you repeat it? Someone just asked this question, right? Are you into Web3? Yes. Before this ChatGPT 3 wave, so obviously that wave is the Web3 wave. So once this ChatGPT era is came, so everyone just forgetting about this Web3. So that will also play a crucial role as the time goes up. So what I think about Web3 is कि यार I am एकदम deep into Web3 था मैं, ठीक है. At the time I was Discord bots, और मुझे पूरा का पूरा स्कैम है ना, वो Discord bots बना के पता चल गया. लोग मुझसे ऐसे bots बनाते थे जिससे basically just get
a chance to uh, get the notification of an NFT Hmm. drop. सिर्फ चांस के लिए वो लोग $20 चार्ज करते थे. NFT का अलग पैसा. भाई क्या Hmm. सीरियसली स्कैम चल रहा है. इट्स ऑल आर्टिफिशियल हाइप. आर्टिफिशियली एक ही NFT बनाओ उसको Yes, yes. तो क्या ही है. Okay. और मुझे So that's nice. माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ट्रायंगल बनाया गया था. It's crazy. It's crazy. Okay, okay. So yeah. So और yeah, that's so out there, audience. If you want to ask anything about, you can ask. So we have very detailed tech champ with us. how is the market right now about Web3? Okay. So मुझे लगता है कि Web3 स्लोली या तो डाई ऑफ हो जाएगा या तो उसका कुछ ऐसा यूज केस नया आएगा जिससे बहुत बूम होता है. क्योंकि अभी जो चल रहा है ना वो बहुत प्रॉपर चल रहा है Web3 का. I mean AI का. क्योंकि AI is literally helpful in people's everyday lives now. जब भी Web3 का ऐसा होगा ना तभी उसका बूम आएगा. Yes, guys. Every one of us should learn that prompt engineering. Okay, so it will help us a lot. So as we go forward, so it's definitely how effectively we are using the chat GPT. Okay, so how effectively you are designing that prompt in order to get the best responses from the GPT model. Right. How And it's not that to execute a startup idea. how to execute a startup idea. Okay. So let's go That's step an interesting question. week 1 make a minimum viable product. Okay, एक वीक में बन जाना चाहिए unless you are making a mass roll or something. एकदम उसका बेसिक से बेसिक वर्जन जिसमें सिर्फ एक ही फीचर हो. It does not even have to work for everyone. तुम लोग ऐसा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऐसा ऐप बना रहा हूँ जिधर लोग बात करके अपने दिन के बारे में बोल सकते हैं कैसा दिन गया, तो एक मेरा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है कि मैंने लोगों से बात करा लिया व्हाट्सएप पर और मैंने देखा कि वो काम कर रहा है कि नहीं, उससे वैलिडेशन आता है. सो देन यू स्टार्ट मार्केटिंग इट टू यू गेट सम अर्ली यूजर्स. यू नीड 20 अर्ली यूजर्स एटलीस्ट. फिर उनके साथ साथ उनके फीडबैक के साथ साथ बनाने का. हाँ, एंड ऑनेस्टली स्टार्टअप को स्टार्टअप जैसे मत लो, स्टार्टअप को प्रोडक्ट जैसे लो. यू हैव टू बिल्ड अ प्रोडक्ट. Yes. 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 प्रोडक्ट फर्स्ट, यूजर्स फर्स्ट. स्टार्टअप तुम लोग कंपनी बनाने जाओगे, कंपनी के टाइम में ही आधा टाइम जाएगा. प्रोडक्ट सबसे पहले बनाएगा तो ज्यादा वो होगा. Yes, very nice, very nice. That's very nice, very short. So, yeah, that's very precise explanation you have given. So, just make your product best. Okay. So, prove 0 to 1 first. After that, you can able to scale it up. Right. Okay. Yeah, someone asking you to speak in English, so it's better to speak in English Okay. there. So, everyone able to understand. Because I have like 20% English speaking audience. इसके लिए मैं, that's why I make videos in English as well. How do Okay, okay. and from where? I'm new in web dev and have little surface knowledge about blockchain, but right now I'm thinking to focus on AI. So for clients, all you need to do is put your stuff out there, put everything on Instagram, create content, make Twitter threads, and the more you can get noticed online, the better, because everything happens online in this day and age. So just try to put everything as much as you can online. Document your success, document your failure, everything. Like if you check my Twitter, right, it literally has my entire life history from the time I started coding. And that's what has hit me. That sounds crazy. What do you do if you have a startup idea but do not know how to write complex code? Learn how to write complex code. It is not that difficult. Honestly, people just stress out about coding. Ki it is very difficult. It is very difficult. But once you, first thing, if you have the drive to learn, the passion to learn, and second thing, if you have, a really good execution and determination towards that, I don't think it is that difficult to learn to code, because we live in the information age.
everything is available for free. Everything you can literally learn web development, app development, everything. So learn to write complex code yourself. Do not wait for someone else. How can I see your Twitter handle? It is Dravya Shah on Twitter. DHRABYA. What Yeah. is good? Someone is asking about which project is best for the now in web development if I want to impress an interview. Next, So yeah, you can ask this kind of question. It will be helpful to lot more people. right. It is Next.js. Like at least today, everyone is using Next.js, from big companies to small startups. Everyone is, because Next.js is so easy to use, and it has basically all the features right out of the box. So all you need to do is go through the documentation, learn React, and it is a full stack framework, which means you only need to learn Next.js. You do not need to learn front end and back end separately. So learn Next.js for web development. Yeah, and also you can, as you are a beginner or just started with the coding, so you can build some clones like, yeah, you can build some Netflix clone like that, or you can build some Swiggy clone like that. Hmm. This will also able to help you in order to crack that interview again. Guys, whenever you ask a question, make sure to use the Q&A feature because the chat can go away. So I'll have to scroll up and see. Yes, yes. So someone asked prompt engineering. Like, are there any roles available for prompt engineering? So honestly, prompt engineering is a good job, but there are very less roles for prompt engineering. Like if you see, I have only met one prompt engineer who is actually working in my entire life. So that's how rare it is for people to get jobs. But it is a valuable skill to have. What kind of content do you think should be shown on social media in order to create a face value? Um, I think you need to okay. So check out. Okay, for example, I'm building something. Every day I can put that, hey, itna hua hai, itna hua hai, itna hua hai. So that is a great way to do it. Your views on Bubble. हाँ, Bubble is great. No code is great. लेकिन the problem is with no code, जैसे मैंने इसके पहले भी बोला था कि people get stuck on no code कि और क्या कर सकता है. So if you want to scale, बहुत बड़ा बनाना है तो no code use मत करना. Your views on Andrew Tate, bruh. Do I really look like an Andrew Tate follower? I'm looking for an internship. What is the best way to get internships? Again, खुद का कंटेंट डालते रहो यार. लिटरली कि जितना कंटेंट तुम लोग डालोगे ना इंटरनेट पर, उतना ही तुम लोग को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. हाय, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? माय नेक्स्ट प्लान अभी के लिए तो मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, एंड लेटर ऑन आई माइट एक्चुअली जैसे बड़ा करना है कुछ, तो बड़ा करने के लिए छोटी चीज से अभी कॉलेज जाऊंगा. Simultaneously with college, I will try to build something cool, and I will keep learning. And after college, a couple years job, and then my own stuff. Any tips for college, bro? I'm not in college yet. I haven't even been to college ever. Someone asked college. नहीं यार, मैंने कॉलेज नहीं गया मैं एक भी बार. You look smart, haircut fits you, bro. लोग मुझे हेयरकट के लिए चिढ़ाता है यार कि अच्छा हेयरकट नहीं, अच्छा हेयरकट. मैं कितना बोलता हूँ यार कि yes I am 17. मैं कितना बोलता हूँ कि यार मेरा नहीं है हेयरकट अच्छा.
Have you tried working for newly funded startups? Yes, I have, and it was a good experience. It was a great learning experience. लेकिन बहुत stressful होता है, बहुत. Hi खुशी. um Personality and goals like this, people think you in college. So I am going to join college this year. So let's see. It will be a little bit crazy. If you have any questions, ask them in your Q&A section. What's your view on Varun Maya? भाई amazing guy यार. मतलब मैं उसका कंटेंट बहुत टाइम से देख रहा हूँ. I was in Avalon Meta Discord server as well. हाँ अभी तो वरुण माया आई थिंक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है. प्रॉब्लम ये है कि वरुण माया थोड़ा सा डराता है लोगों को. सो दैट इज वन थिंग. पीपल गेट रियली स्कैर्ड. थोड़ा होप देना चाहिए. Bro, enjoy your college life in future. Don't end up like me doing job and college at the same time and fling most of part of it. Yes, yes, definitely. इसके लिए मैं अभी कर रहा हूँ. फिर थोड़ा टाइम पास करूंगा. फिर देखूंगा होता है कि नहीं होता है. Someone requested to join. चलो भाई. Such a cool guy for real, bro. ठीक है भाई. Percentage 12th. 86%. Bro, your Twitter chatbot is really amazing. Thanks, man. If you want to join live video, request कर दो, मैं ऐड कर दूंगा. प्रोफाइल देखकर. Don't use technology. इतना बोलता है, अब तू क्या कर रहा है यार. टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी चीज है. My GitHub, it is github.com/dravya. DHRAVYA. All the links are in my website. Just go and check it out. एक मिनट है ना. लिंक्डइन का कुछ नहीं था. मैं स्टोरी डाल देता हूँ. मेरे प्रोफाइल पर देख लो, सारे लिंक्स मिल जाएंगे. Hi, I am React developer. Hi, Mohammed. Hello, Hi, what's up? I'm good. Yes, I was asking. I'm the one who is spamming lots of questions in the comment section, but I have an idea, very nice idea. But the problem is there requires very tight privacy. So I don't know that much of coding. So what should I do? I can learn, I know, but what are the courses that you may suggest? For coding, right? Yeah. So, YouTube पर no, not on YouTube. That called educative.io. उस पर React, sorry, उस पर JavaScript और TypeScript के courses बहुत अच्छे हैं. तो start with that. मेरे blog में है सब कुछ. मेरे प्रोफाइल पर जाना, मेरे वेबसाइट पर जाना. उसमें एक पूरा ब्लॉग है जिसमें सारे रिसोर्सेज है जो मैंने. तो डू नॉट लर्न मोन. ओके, डू नॉट लर्न मोन नाउ. अभी मोन स्टैक सुना होगा किसी ने? सुना? नहीं. हाँ, सो मोन एक बहुत पॉपुलर स्टैक. वो मन अभी उसका इतना यूज नहीं है. मेरे ब्लॉग में पूरा प्रॉपर है कि क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, कहाँ पर सब कुछ आके रीड कर. हाँ, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था. और तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था सिरी जीपीटी, राइट, मैंने भी ऐसा बनाने का ट्राई किया था. बट मेरा उसमें क्या था कि मुझे ऐसा चाहिए था कि बार बार जब भी हम कुछ आस्क करें चैट जीपीटी से, कोड रीजनरेट होना चाहिए. जो फाइल में कोड है उसका वही चेंज होके फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे. पर उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो मैंने वो बंद कर दिया. पर सीरी जीपीटी जैसा सिमिलरिटी हुआ मेरे से. स्पीच रिकॉग्निशन और वो सब यूज कर. स्पीच
टेक्स्ट टू स्पीच, सॉरी। हाँ, लोग है ना हाँ। उसके लिए ये यूज करता है, क्या बोलता है, जावास्क्रिप्ट लिखता है, एप्पल शॉर्टकट करता है, तो यू कैन एक्चुअली रन जावास्क्रिप्ट इन एप्पल शॉर्टकट, तो बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, और बस, नो थैंक प्रॉब्लम। यू। एंड कहाँ से होता है? मैं हाँ। यस, um what tech stack should I use? My favorite tech stack हमेशा यही रहा है, Next.js with TypeScript, TRPC, Tailwind, CSS. हाँ बस यही, इसमें सब कुछ हो जाता है। क्वेश्चन आया कोई? एंड्रयू टेट, यार मैंने बोला मेरे को नहीं है इंटरेस्ट। कीप ग्रोइंग, थैंक्स नमन। प्रतीक कुमार, हाय सुधम, नहीं, oh wow, you follow me on Instagram as well. Hi. Your views on Andrew Tate, कितनी बार पूछेगा यार? My view on Andrew Tate is nothing. मैं Andrew Tate follower नहीं हूँ। हेमंत, I am doing great यार। Would love to follow our journey. Wireframes for timely. Hi. People have a very big misconception about JavaScript. They think they can learn JavaScript in 4 to 5 hours. What's your view on that? No. Learning anything, you cannot learn something completely ever. तो JavaScript भी किसी को आता नहीं है. It is a progressive thing, right? So Yeah. syntax May, does not mean knowing the language, how it works, and how to actually use it to your advantage. You need to get used to the language by making projects. That is called learning. Syntax is basically the same as English. Ki you write something and something happens, but that's not how programming works. यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, 2 दिन फुल जावास्क्रिप्ट ऑन 2 hours, फुल जावास्क्रिप्ट ऑन 3 hours. What's your view on that? It is all okay. मैं बहुत महीने से पढ़ रहा हूँ जावास्क्रिप्ट, अभी तक मुझे उतना समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, फिर भी लोग 2 hour का वीडियो, 3 hour का वीडियो ऐसा बोलते हैं। उसमें भी क्या है? नहीं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए अच्छे वीडियोस है ऑब्वियसली, कि फटफट हो जाता है। इवन रिएक्ट के लिए मैंने इस वीडियोस से स्टार्टिंग में सीखा था, लेकिन मैंने एक्चुअल में कुछ सीखा ही नहीं था, क्योंकि आई रियलाइज दैट इट इज डूइंग मोर हार्म देन गुड, because I was basically in something called tutorial hell. I was following the tutorial line by line, but when the tutorial ends, I cannot make anything by myself, and that is a really bad. That's what you do. Okay. Okay. You should make your own projects. Okay. Means when do we have to start a project? Like right after watching the tutorial, or we have to watch a tutorial based project? Like how? In the start, after you complete the language, watch 1 or 2 tutorial projects. For example, if you're learning React, you can go like something with React, okay, and follow it entirely, even if you have to follow it line by line. But right after that, try to make something of your own, something that you are really interested. And if you don't know what to make, just clone any app, make an Instagram clone or something like that. So that's how I would do it. That's how I did do it actually. Okay. Okay, if you want to build a project, how would we need to approach it? Like as I mentioned earlier, so you make a minimum viable product in first week. Like the current version of timely.app was built in there was no effort that went into it, which is why it does not work right now. Then the second week, you keep building the app, but also you look for potential users. You talk to your users. You need at least
20 users who would, who would like to use it later on. Third step is keep talking to users and release it. Like release the actual bigger version. And then fourth step is to, again, users are in the on the forefront of any product. That's why we make products, because it is for the users. So keep talking to them and always, keep. And also, while making a product, people really waste a lot of the time in design. Design is important, but you can build up your design slowly. So don't just design the app and get stuck on that design forever. Keep changing your design a little bit based on feedback. Okay. If I want to become a MERN stack developer, how much CSS is enough for me? Like I have to go to deep or like some beginner or intermediate? For MERN stack, why are you doing MERN first of all? Because it's a full stack, it enables to do more projects. I can build anything if I know MERN stack. That's what I think. For full If I stack, see any application, today for MERN stack, this Next.js is really popular because you can't do anything with Next.js. It is a full stack framework. Instead of going to 1,000 places, MongoDB is a different thing than everything. Everything is managed at one place. You don't need a separate Express server and a separate React project. Everything is managed in one place, hosted in one place in Next.js. I think you should definitely look into Next.js and see if it yeah. interests you. Currently, I'm in MERN stack area. After some few weeks, I will get into the Next.js part. Thank you. And It was very helpful. CSS. So CSS. I think CSS, you can learn as you do it. Like you don't need everything. So just learn how to add padding and how to change text color, etc., etc. What is flex, what is grid, and once you have the hang of it, you can start developing. And then whenever you come across an issue, you can look it up, because that's how, and copy paste code, obviously. Okay. I have one more question. After using CSS frameworks, I have completely forgotten the plain CSS. Is it okay? Is it common? Which CSS? Let me guess. It was Tailwind, right? Tailwind. Yeah, Tailwind. It's definitely Tailwind. Same, bro. Of course, it's Tailwind. CSS, and I think it's that big of a deal as long as I can keep pushing out projects. Obviously, you will not forget. I think that Tailwind has actually made my grasp on CSS even better, because now. Yeah. But you're going to forget the plain CSS. But the syntax of plain CSS, right? How it works and how to create UIs, which is the the functionality of CSS. You even get better at it. You get better at knowing how Flexbox works, how grids work, things like that, right? So Tailwind CSS might actually help you make your CSS better, but obviously you need to know the syntax when you need it. Okay. Do you use any component-based Tailwind framework? No. Okay. I use Shard.cn UI. You must have heard of it. It is a React. No, I haven't heard of it. I use DevUI. DevUI. Hitesh Chaudhry's. It's very good. It's very good. For e-commerce related project, it's very good. Nice. Thanks. No problem, man. Yeah, okay. It was nice talking to you. Do you know? Yeah, it's the same. On Discord or WhatsApp or Instagram. Okay, so I have been a part of a lot of these communities, and okay, let's make our own community. Who would like to join one? You guys are from college, and how did you meet each other? I just completed my 12th. I met through a common friend, and his dad is also with business. Should I learn? Okay, so
Should I learn React or Next.js? You should learn both because Next.js is basically a React framework. So it would be helpful to learn both. Discord community, yes. Okay, let's make it right away. Who would like to moderate it and keep it active? That is a difficult part. Shiv, like you know how one of my communities basically died away, right? Because no one is active. Let's see if this one gets active. Make a server. I'm literally doing it right now. By the way, I am going to make a new video about tomorrow, probably. Yay! Create my own for me and my friend. It's done, man. I created the community. What's going on? Abhi, everyone is talking, everyone is asking questions, and for the people who just joined, hi. You can feel free to ask questions in the Q&A tab, and I will answer them. I dropped out from college, start committing creation. What's your opinion? I don't think it is wise to drop out of college because college does teach you a lot about not just programming but also about life. The link to my blog, okay, I will just pin it. That is my blog. I'd love to connect. Hi, bro. Samya. Whoever wants to talk to me can send a request here. Hi, Ronak. Uh, Someone asked, I learned JavaScript and MongoDB, then I stuck. Okay, I think you should learn Next.js and you should make personal projects right now and create a proof of work portfolio, and people will definitely like to, you know, be like hire you for a startup or whatever. Wow, so many people just joined. If you have any questions, drop them in the Q&A box and uh, I will answer them. Or if you want to join with me on call, you can do that too. If you don't mind, for how much did you sell your app? It was a good amount. It is definitely more than what software engineers earn in a year. Hi, damn, so many people. I have a few ideas for SaaS, but they are based on AI models. What should I learn for basic? Um, you should learn JavaScript and TypeScript and Next.js. It is in my blog, okay? Just scroll down. Um, and then you should learn how to use the OpenAI API. And you can create your own models if you want to. I just created the server. I am learning CPP with DSA. What's your opinion? It's good. CPP is a great language to start with. DSA, you know, I I'm not that into DSA and I don't support it that much because I'm more of a product person. And what matters to me is if I can create products with whatever I do. So yes.
If anyone wants to come and have a chat with me, feel free to join. Okay. After this coffee chat ends, I will share a link to the Discord server and feel free to join and let's make a community, man. I am doing web development courses for a website. Currently lagging the course by 4 months. Damn, dude, that is a lot of time. प्यार हुआ है कभी भाई बहुत बार हुआ है यार क्या बताया लेकिन अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे ये सब में मेरा वॉलपेपर देख लो मजा आएगी लॉल लुक एट दिस any advice for data science lover no man I myself don't have that much experience in data science how would I give advice you remember me what is from Discord yes I do I am from Mumbai Ritesh so I will be ending this in 5 minutes so you can keep asking or join if you want to how much have you earned till now by making web apps so are you talking about only web apps like personal projects or like entire thing with job and everything because I've also been working in jobs your videos gave me a motivation to grind and work hard yes man keep the grind going on I use Next.js man that's my tech stack Mumbai where I live in the suburbs great mobile addiction any solution delete these apps 90% of these apps are useless and focus more on content creation than content consumption and that's really all you need to do hacking or AI development पूरे दिन डेस्क पे बैठे सोशल स्किल्स खराब कर रहे हैं कोई रिलेशनशिप एडवाइस दो अरे क्या रिलेशनशिप एडवाइस दूं मैं मेरा खुद का नहीं चल रहा है इधर what are your thoughts on .NET framework? .NET framework is too old now. Don't learn. Like new startups do not use .NET. You will get a normal engineering job in in old companies, and you will just do the 9 to 5 job or your entire life. It will not be pleasant. I am pursuing BBA plus MBA for an IIM, but I am not sure if I should go for corporate life or experiment with my skills and go for ST my own. Right now, like we are in a really lucky stage, right? We can experiment and we can try these new things out and keep trying. And yes, and then later on when you get the experience you will get into the corporate life automatically how is Django I am not that much of a Django fan I use Next.js damn I use Next.js okay for the stack this is my stack that I mainly use can I print multiple things no super misconception has a great revamp .NET 7 .NET Core smooths every other web API framework don't write it off I honestly have not seen that many people use .NET framework in my last job they did use it and I know I have used .NET framework myself as well but the community does not feel as big as the JavaScript community T3 full must hai. Yes, bro, T3. Moon developer. No, I am a T3 stack developer. Java, Python or JavaScript. I would go for JavaScript. Discord से क्या फायदा होता है भाई अरे Discord में अच्छा खासा community बन जाता है friends बन जाता है and once you have a network of peers right that are doing the same thing as you are automatically motivated and you